गुजरात के देड़ियापाड़ा से आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा के समर्थन में अब आदिवासी समाज खुलकर सामने आ गया है। सिर्फ गुजरात में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी आई सपोर्ट चेतर वसावा के तहत जन समर्थन सामने आ रहा है। राजस्थान गुजरात सीमा पर बसे मानगढ़ में आदिवासी समाज के हजारों लोग आम आदमी पार्टी के गुजरात के विधायक चेतर वसावा के समर्थन में जुटे। सभा में मौजूद लोगों ने आई सपोर्ट चेतर वसावा लिखे बैनर लहराकर विधायक के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की। आम आदमी पार्टी ने 20 जुलाई को नर्मदा जिले के राजपीपला में नंद भीलराजा की प्रतिमा से कलेक्टर कार्यालय तक एक विशाल मार्च निकालने की घोषणा की है। इस दौरान राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। पार्टी का दावा है कि नर्मदा जिले के 1 लाख लोग हस्ताक्षर कर चेतर वसावा के समर्थन में अपना सहयोग दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि विधायक चेतर वसावा और अन्य लोगों के खिलाफ साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है। इस फैसले के बाद गुजरात के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी समाज में भी नाराजगी देखी जा रही है। आज अमे मानगढ़नी भूमि पर 17 जुलाई 2026 ना रोज अहींया गाड़ी भेगा थयेला छे, जेमां महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरातना तमाम आदिवासी समाजना आगेवानो, युवा साथी मित्रों, अलग अलग संगठनना लोको आज एक मंच पर अमे भेगा थया छे। आज देश ने आजाद थया 79 वर्ष थई गया, तेम छतां पण आज अमारा आदिवासी समाजना लोको रोड, रस्ता, शिक्षण, आरोग्य माटे आज ए लोको वलखा मारी रह्या छे। आज अमारा लोकोने न्याय नथी मळतो। आज अमारा लोको जे खेतीनी जमीन जे लोको जंगलोमां खेडी रह्या छे, आज तेवा लोकोने एनकाउंटर करी देवामां आवे छे, नक्सलीओ जाहेर करवामां आवे छे, खोटा केसो करवामां आवे छे, एफआईआरओ करी अने अमारा आगेवानो होय, धारासभ्य श्री चैतरभाई वसावा होय, एवा लोकोने आज खोटा केसो करी आज एमने जेलमां मूकवामां आवे छे, अमारो अवाज दबाववामां आवे छे। पण मित्रों, आज अमारो तमाम आदिवासी समाज आज जागी गयो छे अने अमारा हक અને અધિકાર માટે અવાજ ઉઠાવે છે। આવનારા દિવસોમાં આ સરકાર સામે અમે મજબૂતાઈથી લડીશું, અમારો અવાજ બુલંદ કરીશું। અમારા ધારાસભ્યો, અમારા આગેવાનોને જે આ ખોટા કેસો, ખોટા ષડયંત્રો કરી અને આ જે કાળા અંગ્રેજોની સાથે સાથે આ ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસમાં જે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ છે, એ ધારાસભ્યો હોય, સાંસદ સભ્યો હોય, એ લોકો વિધાનસભામાં અમારો અવાજ નથી મૂકતા, એ સાંસદમાં અમારો અવાજ નથી મૂકતા। અને જ્યારે જ્યારે અમારા સમાજને, અમારા લોકોની જરૂર પડશે, ત્યારે આ તમામ સમાજ આવનારા દિવસોમાં રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાતમાંથી એક થશે અને જેવી રીતે ગોરા અંગ્રેજો અમારી પર રાજ કરતા હતા, એવી રીતે અમારા જ આદિવાસી સમાજમાંથી ઘણા નેતાઓ ચૂંટાઈ અને આ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં પોતાના સ્વાર્થના એ લોકો રોટલા શેકી રહ્યા છે। એ આવનારા દિવસોમાં અમે નહીં થવા દઈએ। અમારા ચૈતરભાઈ પર પણ આજે ઘણા આગેવાનશ્રીઓએ એ મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે કે ચૈતરભાઈ વસાવા પર જે ખોટી કેસો, ખોટા ફરિયાદો, ખોટી એફઆઈઆરઓ કરી અને એમને જેલમાં એમણે 7-7 વર્ષની સજા કરવામાં આવી છે। આવનારા દિવસોમાં આ તમામ રાજ્યના લોકો એ ગાંધીનગર કૂચ કરશે અને જરૂર પડશે તો દિલ્હી લોકસભાનો પણ અમે ઘેરાવો કરીશું સંસદમાં।